Hi guys, welcome to my YouTube channel Nemat Shah Official. Friends, this is Nemat Shah Official, and today we can study about nature of light. What is nature of light and how we can study it? That nature of light is very interesting and important topic, and we can study that. What is nature of light and how we can study nature of light in this short video. But after going further in this video and after to start the detail of this topic, if you are new to my channel, then subscribe my this channel and also press the bell icon button that you will never miss you any video from my this channel, any update from my this channel, and also like and share this video. दोस्तों आज की वीडियो नेचर ऑफ लाइट के हवाले से है। नेचर ऑफ लाइट से क्या मुराद है और नेचर ऑफ लाइट की स्टडी हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके हवाले से हम डिटेल जानेंगे, इसकी कुछ वैल्यूज़ की कुछ इक्वेशंस या जो भी है उसको हम आपके साथ शरीक करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे और किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। एंड इसके साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है क्या टॉपिक है इसका, नेचर ऑफ लाइट। लाइट के हवाले से हमने डिफरेंट स्टडीज़ वगैरह की है, लेकिन नेचर ऑफ लाइट, इसका नेचर कैसा है इसके बारे में जो है अब हम जानना चाहेंगे। Presently, when we believe that the nature of light is dual, in case of reflection, refraction, and diffraction, interference, and polarization, light behave like wave. ये तो खैर मैंने दरमियान से स्टार्ट किया, स्टार्ट से मैं जो है शुरू करता हूँ। The most important development about the nature of light was the work of Maxwell. Maxwell ने स्टडी किया। In 1873, he showed that the light is a form of a high frequency electromagnetic wave. उसने ये शो किया कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हाई फ्रीक्वेंसी फॉर्म है। The electromagnetic field vectors are oscillating perpendicular to the direction of propagation of the wave. ठीक है, I hope you understand. And this theory predicts that these waves should have a velocity of about 3 multiplied by 10 power 10 power 8 meter per second negative, and these waves do not require any medium for the propagation. Nature of light में जो है इसमें जो वेव्स आते हैं उस पर लाइट के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का नो रिक्वायरमेंट नीड नहीं है, ठीक है। विदाउट मीडियम ये जो है होता है। Presently, when we believe that the nature of light is dual, in case of what? In case of the reflection, diffraction, interference, polarization, light behave like wave, while in this case shift it behave like particle. इन इसकी स्टडी आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है। पहले इसको सरसरी पढ़े, उसके बाद इस पर कुछ अपने माइंड सेट को स्टडी करें, ठीक है। उसके हवाले से जो है उसके माइंड सेट पे थोड़ा जोर दे और इस पर थोड़ा सोचे। आज की वीडियो यही तक थी। अल्लाह हाफिज़।